In this video, we will discuss about sporophyte of Marchantia or sporogonium of Marchantia. So when sporogonium is produced, it is produced from the zygote. Zygote is produced inside the archegonium, and this is the first diploid cell produced after fertilization in Marchantia. Now this is the zygote which is present in the female dilated venter called as venter part of the archegonium. How this is produced, we have earlier discussed. When fertilization take place, now this is the female structure of archegonium. This is the egg which is haploid in genetic constitution, and this is its nucleus. And these are the spermatozoid which will reach toward the egg cell, and fertilization will take place. After fertilization, when two nuclei fuse, there is production of diploid structure called as zygote. Now this zygote will undergo mitotic cell division after its fertilization process, and this is the first cell of sporophytic generation, helps in formation of a sporophyte of Marchantia. So this will undergo mitotic cell division and sporophyte will be diploid in nature. Now sporophyte of Marchantia is differentiated into three parts: foot, seta and capsule. We'll discuss turn by turn all the parts. We can see here, this is the LS of Archegonia 4 of Marchantia. This is the stalk of the Archegonia 4, and this is upper disc, and on the lower part are present female structure called as Archegonia. Now youngest are present toward the stalk and oldest away from the stalk, and these Archegonia will get fertilized, and here sporogonium will be produced after fertilization. And we can see here, now this is the zygote which will help in formation of the sporophyte, and at this point below this disc, now this is the sporophyte which is being produced from the archegonium after fertilization, right? So this is the archegonium, this is its egg cell. Now after fertilization, this will form diploid structure called as zygote. Now this zygote will undergo mitotic cell division and which will produce the sporophyte, and this is the sporophyte. We'll discuss its structure in detail. So this is being produced underneath the disc of the Archegonia 4. Now what is the structure of sporophyte of Marchantia? This is diploid in genetic constitution because this is being produced after fusion of egg and sperm cell. So when two haploid gametes they meet and they form a diploid structure which will undergo mitotic cell division to form the sporophyte. Now if we see the sporophyte of Marchantia, this is differentiated into foot, seta, and this part is called as capsule. So this is differentiated into foot, seta and capsule. Foot is the part which helps in fixation of the sporophyte to the gametophytic tissue, and this will also help in absorption of water and minerals from the gametophyte for the sporophyte. And this is the seta part which carries the capsule at its tip, and this may help in transfer of the nutrients as well as this support the capsule part. Now this capsule at young stage can be filled with sporogenous tissue. Sporogenous tissue is that diploid tissue. All cells they are of one type, but later on they may get differentiated to form spore mother cell, and they may also form elaters. Now elaters, they are sterile structure, they are tapered like this and they have thickenings like this. Basically, elaters, they are hygroscopic in nature, mean when water is available they will swell up, and when water is not available they will dry up. So they help in adhesions of the capsule for the liberation of the spore. Adhesions mean capsule may rupture from here, and all these elaters may entangle with each other, occupy more space, and spores may be dispersed, or they may come out by breaking the capsule wall toward the outer side. This is called as adhesions of the capsule for the liberation of the spores. So these sporogenous cells, other sporogenous cells, they may get differentiated to form spore mother cell. Now its nucleus will be diploid. Now this will undergo meiotic cell division to form 4 haploid nuclei, and they will get organized like this in the form of spore tetrad, 3 from the upper side and 1 is at the back side. This is called as spore tetrad. So we can say this is differentiated into foot, seta and capsule, and this is the capsule part at maturity. This will have spore mother cell or spores, and these are elaters. Now spore mother cell, they are 4 in number. Then they can get
separated from each other and they can help in formation of 4 spores like this. So this is the structure of sporophyte. So sporophyte is differentiated into foot, seta and capsule, and this also has protective covering. Now we can see here, this is the protective covering called as calyptra, which is being produced outside the sporophyte, and this is protective covering जो पहले ही है archegonium के आसपास. So this is called as perigonium, right? So two protective coverings are there, calyptra and perigonium. So foot हमने देखा है अभी. This is bulbous, made up of parenchymatous tissue. ये parenchymatous tissue का बना हुआ है. Parenchymatous tissue mean thin walled cells, and this is help in anchoring into the gametophytic tissue. और जो डिवेल्प हो रहा है स्पोरोफाइट, उसके लिए पानी और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. अब सीटा जो है, दिस इज मेड अप ऑफ वर्टिकल इलोंगेटेड सेल. दिस कनेक्ट्स एक्चुअली, और दिस इज अ यू कैन से ब्रिज बिटवीन फुट एंड द कैप्सूल पार्ट. कैप्सूल एज वी हैव ऑलरेडी सीन, दिस इज ओवल इन शेप, और ये डिस्टल पार्ट पे पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है ऑफ द स्पोरोगोनियम. अगर हम कैप्सूल को देखें तो कैप्सूल की स्ट्रक्चर देखें तो एक सिंगल वॉल है जो इसको बाइंड कर रही है. सो दिस इज बाउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड जैकेटेड वॉल, एंड इट हैज स्पोर मदर सेल विच अंडरगो मेयोसिस टू फॉर्म स्पोर. वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड. बेसिकली जो स्पोर्स होंगे दे विल बी बाउंडेड बाय 2 वॉल्स. वन इज द आउटर एंड सेकेंड इज द इनर. दिस इज outer exine, this is inner intine nucleus, and this will be the cytoplasm. So अब ये जो spores हैं, when they will be liberated from the capsule part of the sporophyte of Marchantia, they will germinate to form the gametophyte. क्योंकि वो all the bryophytes they grow in moist shady places, तो जिस भी ज़मीन पे या अर्थ पे वो गिरेंगे तो वहाँ पे moisture होगा, तो ये जो spores है वो germinate करना शुरू कर देंगे. इलेटर्स जो है, जैसे हमने डिस्कस किया, वो ऐसे टेपर्ड हैं और उसमें ऐसे थिकनिंग्स हैं जो इसको थोड़ा सपोर्ट देती हैं, एंड दे आल्सो हेल्प इन डेहेजन्स ऑफ द कैप्सूल फॉर द लिबरेशन ऑफ द स्पोर. तो इस डायग्राम में हमने दिखाया कि ये स्पोर मदर सेल है. दिस इज अंडरगोइंग मेयोसिस टू फॉर्म 4 स्पोर्स. 3 नज़र आ रहे हैं, एक पीछे की तरफ है. ये फिर चारों सेपरेट हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पोर्स. नाउ विल डिस्कस ये जो स्पोरोगोनियम है, जैसे इट इज़ इन द एयर, जब ये ड्राई अप हो जाएगा, दिस विल लूज वाटर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो दिस विल ड्राई अप एंड दिस जहाँ से वो वीक होगा, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ डेहेजन्स, वहाँ से वो रप्चर होगा. और जो हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट है इलेटर्स का, वो डेहेजन्स में हेल्प करेगा. इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है व्हाट इज़ हाइग्रोस्कोपिक नेचर, कि इफ़ वी हैव केप्ट सम बिस्किट्स इन द कंटेनर एंड उसका जो ढक्कन है कंटेनर का वो खुला रह जाए, यहाँ अपने प्लेट में ऐसा बाहर रख दें, जब ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो तो सारे बिस्किट जो हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर से हम उसको ड्राई करें तो वो ड्राई हो जाते हैं. तो ऐसी नेचर को हम हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट बोलते हैं. सो हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो डेहेजन्स के बाद अलग अलग हो जाएंगे और वो बाहर गिरेंगे. स्पोर्स जो है हवा की हेल्प से या बारिश की हेल्प से, रेन की हेल्प से डिस्पर्स हो जाते हैं. अब ये जो स्पोर्स हैं जब ये ज़मीन पे गिरेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया कि ब्रायोफाइट्स का जो हैबिटेट है दैट इज़ दे ग्रो एट मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, या वहाँ पे अगर पानी की अवेलेबिलिटी है तो स्पोर उस पानी को एब्जॉर्ब करेगा. जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा. इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर, तो ये बाहर वाली जो वॉल है दिस इज़ कॉल्ड एज एक्साइन, अंदर वाली वॉल को हम इंटाइन बोलते हैं. दिस इज़ द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस. तो जब ये जहाँ से भी वीक होगी, जब ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऐसे ही जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है, तो इससे जर्म ट्यूब बन जाता है. दिस इज़ कॉल्ड एज स्पोर जर्मिनेशन. तो पहले एक, जैसे मान लीजिए ये स्पोर है तो इसने ऐसे जर्म ट्यूब दिया, फिर ये 2 में डिवाइड हो गया, 3 में डिवाइड हो गया, तो ये वाले जो सेल्स हैं ऊपर वाले दे टर्न ग्रीन इन कलर बिकॉज दे डिवेल्प क्लोरोफिल. और जो नीचे वाला सेल है दिस डजंट डिवेल्प क्लोरोफिल एंड दिस डिवेल्प इनटू अ राइजोइडल सेल, जो राइजोइड बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनमें रूट्स नहीं होती, राइजोइड्स होती हैं जो इनको फिक्स करने में हेल्प करती हैं. तो अल्टीमेटली ये जो सेल है फिर से डिवाइड करेंगे, बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे, एक प्लेट बन जाएगा पेरेंकाइमेटस सेल्स का, जिसमें एक ऊपर टिप पे एक सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे एपिकल सेल, जो इसकी फर्दर ग्रोथ में हेल्प करेगा. और नीचे वाली साइड पे ऐसे राइजोइड बनने शुरू हो जाएंगे जो इसको ज़मीन में फिक्स करेंगे. अब ग्रीन पार्ट इसके लिए फोटोसिंथेसिस करेगा, राइजोइड इसके लिए पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे. तो अब देखेंगे हम, फिर से ये ग्रो कर गया, ये और सेल्स ग्रो कर गए. यहाँ पर ये एपिकल सेल डिफ्रेंशिएट है, यहाँ पर ये राइजोइड्स हैं जो इसको फिक्स कर रही हैं और इसके लिए पानी और मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे हैं. तो इसको हम यंग थैलस बोलते हैं कि अभी ये
प्रोथैलस यहाँ अभी बन रहा है, डिवेल्प हो रहा है, तो अल्टीमेटली दिस विल डिवेल्प इनटू द मैच्योर गैमेटोफाइट ऑफ मार्केंशिया, जो प्रॉपर राइजोइड, और ये जो इसका थैलस स्ट्रक्चर है लाइक दिस विल डिवेल्प, और नीचे की तरफ राइजोइड्स होंगी. सो स्पोर हैज़ गिवन राइज टू गैमेटोफिटिक टिश्यू. हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि गैमेटोफाइट विल बेयर सेक्स ऑर्गन, और उसके ऊपर मेल एंड फीमेल बॉर्न होंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा जैसे हमने डिस्कस किया, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, स्पोर्स बनेंगे, फिर वो जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट ऑफ मार्केंशिया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पोरोफाइट ऑफ मार्केंशिया. इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment box. Thank you for watching it.